तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इतने बड़े मरहले को तय करके अब नेशनल फाइनल्स तक पहुँच चुके हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो HEC और माइक्रोसॉफ्ट ने जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ कराई है बहुत अच्छा कंपटीशन है। इस तरह के पाकिस्तान में और भी कंपटीशन होने चाहिए। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बढ़ाने और एनालिटिकल स्किल्स और जो हमारे सोसाइटी में जो प्रिवेलिंग इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करता है। और हम लोगों ने रीजनल फाइनल्स में जीते हैं और अब नेशनल फाइनल्स का रिज़ल्ट अनाउंस होने जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह होपफुल हैं कि अच्छा फ़ैसला होगा। जो टीम डिज़र्विंग है वही जीतेगी और वो पाकिस्तान को आगे USA में सियाटल में रिप्रेजेंट करेगी और इंशाल्लाह जो माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप का जो विनर का टाइटल है वो पाकिस्तान में आएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और ये थी टीम मुआविन नश्त इस्लामाबाद से। अब मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के एक स्टूडेंट्स के साथ। मैं उनसे जानना चाहूँगी सबसे पहले उनकी टीम का नाम और फिर मैं उनसे जानना चाहूँगी कि वो कैसा महसूस करें इस लेवल तक आकर। थैंक यू मेरी टीम का नाम है इनकोडर्स माफिया और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से हूँ। तो ये तो मेरे लिए सेकंड टाइम है दैट्स ये तो बहुत बेहतरीन है यहाँ पे आके, क्योंकि लास्ट टाइम मोटिवेट हुआ था तो इस साल 2 प्रोजेक्ट हमारी सेलेक्ट हुए। लास्ट ईयर हमारी यूनिवर्सिटी से एक ही प्रोजेक्ट थी, तो यहाँ से मोटिवेट हुए कि हमने जाके वहाँ कैंपेन की थी। तो उसके बाद हमारे पास इस टाइम यहाँ 2 प्रोजेक्ट्स हमारी यूनिवर्सिटी के मौजूद है। आप इतना लंबा सफ़र तय जो करके आए हैं अपने मॉडल के साथ, तो आपको क्या उम्मीद है अपने मॉडल से इस दफ़ा? देखो पहले तो बिलीव होना चाहिए आपको अपने आप में। जो आप सोचते हैं वो आप ही हैं, ये चीज़ को किसी और को कमेंट करने का मौका ही नहीं होता। ठीक है, तो जो मैं सोचता हूँ जाहिर सी बात है मैं अपने लिए अच्छा ही सोचूंगा। जो चीज़ मैंने डिज़ाइन की है तो अपनी बेहतरी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। जी, और ये थे मेरे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के साथ। मैं मौजूद हूँ स्काई इज़ द लिमिट के साथ, जो कि है लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस मरहले तक आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट एक हमें बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक मैसिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि हम यंगस्टर्स अपने आइडियाज़ को आगे लेकर आएँ। सो आई थिंक इट्स रियली गुड। और आप अपने मॉडल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कहाँ तक लेके जा सकते हैं? बेसिकली आई डिडंट रियली हैड एनी आइडिया कि यहाँ तक भी हम पहुँच सकेंगे, बट इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, सो वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। चलिए अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। और ये थी लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी से। मैं मौजूद हूँ बहरान UET जमशोरो से। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपकी टीम का नाम। हमारी टीम का नाम है 16CS टेक बहरान। जी, आप अपने मॉडल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम हमारा मॉडल इस तरह का है कि जो पैरालाइज पर्सन होता है ना, उनकी आँख को कनेक्ट करके उनको जो भी चाहिए स्क्रीन पे विजुअल जाएंगे, जिस तरफ वो देखेंगे वो एरिया डार्क हो जाएगा, उनकी नीड्स पूरी की जा सकती है। ये हमारा प्रोजेक्ट। और आपको इसमें मुश्किलात क्या फेस करनी पड़ी इस मॉडल को? मैम ये मॉडल असल में डेस्कटॉप बेस्ड है, तो इसमें मुश्किलात कोडिंग ही है असल में। इसके हार्डवेयर बेस्ड तो है नहीं, सेंसर वगैरह को ढूंढने की मुश्किलात पेश नहीं हुई। असल कोडिंग थी जो क्वाड्रेंट्स को मैच करना था और आई की मूवमेंट को कैच करना था, फेस डिटेक्ट जो करवाना था मैं बनूंगा। और आपको उम्मीद है कि आपका ये जो मॉडल है ये आपको आखिर तक लेकर जाएगा? मैम इंशाल्लाह वी आर प्रीटी श्योर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और ये थी बहरान UET जमशोरो। मैं मौजूद हूँ अब यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपका नाम। इंग्लैंडर्स। जी। और मैं जानना चाहूँगी आपके प्रोजेक्ट के बारे में कि वो क्या है? बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है सिक्योरीफाई। ये क्या करता है कि जितने भी पर्सनस हैं थ्रू CCTV कैमरास के थ्रू उनकी लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पे जाती है एडमिन को, और वो नोटिफाई करता है कि पर्सन आइडेंटिफाइड हुआ है और पर्सन री आइडेंटिफाइज हुआ है, और एक्टिविटी रिकग्निशन के थ्रू जो है ना उसको सारी नोटिफिकेशन के थ्रू लोग मेंटेनिंग की जा रही है। जी, और आपको लगता है कि इस तरह के मॉडल्स जो आप बना रहे हैं ये आपको आखिर तक लेके जाएगा? क्योंकि आपका मॉडल बेहतरीन है तो मुझे लगता है। इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे एंड वी आर होपफुल कि हम लोग नीदरलैंड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए बेस्ट ऑफ लक। और ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। मौजूद हूँ अब टीम GK के साथ। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मोहम्मद दानियाल दानिश। जी, आपका मॉडल क्या है? बेसिकली हम लोग काम ये कर रहे हैं कि कोई भी 2 डायमेंशनल ब्लूप्रिंट ले रहे हैं जो घर का नक्शा होता है और उसको हम लोग ऑटोमेटिकली 3 डायमेंशनल मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो होगा ये कि कोई भी बंदा अपना घर का नक्शा देगा और फिर जब वो एक हेडसेट पहनेगा वो ऑटोमेटिकली उसका नक्शा 3 डायमेंशनल मॉडल में बना होगा और वो उसके अंदर घूम फिर भी सकता है और उसके बाद वो चेंज भी कर सकता है उस मॉडल को, कि अगर उसको कोई जगह या दीवार विंडो अच्छी नहीं लग रही तो उसको स्वैप करके किधर और रख भी सकता है। आप जो है अपना मॉडल ये जो लेकर आए हैं नेशनल फाइनल्स तक, आप इसके बारे में बता तो चुके हैं और आपको लगता था कि आप इस मॉडल को लेकर आएंगे यहाँ तक, और आगे जाके आप क्या चाहते हैं इस मॉडल से मज़ीद? हम लोग आगे जाके अभी हम लोग क्योंकि अपने फाइनल ईयर में यही हमारा प्रोजेक्ट है, इसको इंशाल्लाह आगे हम लोग सोच रहे हैं कि डिप्लॉय भी करेंगे, इसको एक प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे और काफ़ी पोटेंशियल बायर्स हैं ऑलरेडी। चलिए बेस्ट ऑफ लक एंड दिस वाज टीम GK।
तो और उसी से और कैसे थे सर उसके अंदर हमारा होता है कि मतलब बॉडी मसल्स काम नहीं करते लाइक ट्राइसेप और मल्टीपल। इसमें क्या है? तो इसके अंदर हमारी गेमिंग इन्वायरमेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक एक इन्वायरमेंट मेंटली स्टिमुलेट करने के साथ। अच्छा, तो उससे ताकि वो रिलेशन हो सके उसकी और यानी कि अच्छी खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। सर हमारी पूरी गेम चलो शाबाश, मिल जाता है। अच्छा, क्रिकेट से इसके लिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया हुआ है ताकि कोई बंदा घूम जाता है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए। नहीं, आप इसमें तस्वीर अपलोड करोगे जो आपको भूल गया है, आपके रिलेटिव फ्रेंड को भी है, जिसको मिलता है वो भी इसमें तस्वीरों की डिटेल अपलोड करेंगे, जिसको मिलता है उसके लोकेशन और आके डिटेल उसको सेंड किया जाएगा और इजीली आपको ऐप इज़ फॉर इजी सेंटर। सर ये IoT बेस्ड होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है हमारा। इसको बनाने के कुछ हमारे 3 मेन मकसद थे। एक तो एजेड पीपल को हेल्प करना, क्योंकि अक्सर हमारे 3rd फ्लोर की लाइट ऑन हो जाती है तो इतनी स्टेयर चढ़ के जाना और उनको बंद करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता था। तो अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए अपनी पूरे घर की जो चीज़ें वो तो वैसे भी पूरी दुनिया उसमें आईफोन में अवेलेबल। सर वो एलेक्सा IP बेस्ड डिवाइसेस पे काम करता है। उसके एक जो फिलिप्स का बल्ब है वो हमें IP बेस्ड 15,000 पे कॉस्ट पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। चले ना चले आपको आता है। जबकि हम आपकी लगी हुई चीज़ें जो ऑर्डिनरी बल्ब होते हैं जीरो के, इन्हीं को ऑटो सारे घर की आप ऑटोमेट कर सकते पूरे घर को ऑटोमेट है विदाउट चेंजिंग विदाउट चेंजिंग बहुत अच्छा है। शाबाश। सर ये हम सिर्फ जस्ट 25,000 क्योंकि हमारे जो फाइनेंस का विजन है कि अपने वर्कर में एनर्जी को कम वेरी करना गुड। क्या बनाया? हमारा जो है सर कि उनके 2 केसेस होते हैं, एक डिप्रेशन है और एक मिनट के पहले प्रिडिक्ट कर देगा कि कोई एग्रेशन होने वाली है ना, और पेरेंट्स को नोटिफाई कर उसके लिए डिवाइस लगानी है वो जो उसको सो उसके क्वेश्चन ठीक है। क्या बना रहे हैं? क्या करते हैं? मुझे क्या सर हमारा प्रोजेक्ट है ग्लव फॉर ब्लाइंड। ये 3 चीज़ें कवर कर रहा है, इंडोर नेविगेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। इंडोर नेविगेशन के लिए हम एवियोस्टिक स्टूडेंट हैं तो हमने फतेह मेडिकल कॉलेज का प्रोग्राम इंडिकेट किया। इसके अंदर जितने भी रूम्स हैं, लेक्चर हॉल्स हैं, लैब्स हैं, उनके लिए कोऑर्डिनेट आपको इसके बारे से बताएंगे तो उसके अंदर आपकी इनिशियल पोजीशन होगी थ्रू कोऑर्डिनेट्स। उस तरह शॉर्टेस्ट ऑब्स्टिकल फ्री पाथ जो होगा वो स्टेप उसको ये नज़र आ जाएगा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये उसको महसूस हो जाएगा। इसे वो थ्रू वॉइस कमांड बताएगा। they will put that gloves के साथ they will do that नेविगेशन के लिए उसको वॉइस कान गुड, वेरी गुड, शाबाश, बड़ी अच्छी। ये सिर्फ एक कैमरा चीप है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मिडिल क्लास को भी यूटिलाइज कर सकें। ये सब फीचर पे जैसे उसके साइज हो गया, शेप, हैचबैक गाड़ी होती है, डाउन होती है, उनको क्लासीफाई करके उसके बाद उसमें काउंसलर आएगा, उसके मतलब ये किसी पुलिस के काम आएगा। इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम लोग जो ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको लोगों को इंकरेज करें कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें, हुकूमत पे रिलाई करनी है। बहुत अच्छा सर, ऐसी गेमिंग है। मतलब फेशियल इमेजिंग को यूज़ करते हैं।
एक ले आएगा, जो भी चीज़ उनको चाहिए होगी उनकी आई गवर्नमेंट से प्रोवाइड कर सर पाकिस्तान को लास्ट ईयर डिक्लेयर किया गया था कि पाकिस्तान में जो ट्रेन सरकारी लेवल में होते हैं द हाईएस्ट रेट ऑफ डेथ्स ऑफ पाकिस्तान, और ये डेथ्स अगर होती हैं रूरल एरियाज में। तो हमने एक डिवाइस बनाई है जो बच्चों को रूरल एरियाज़ में हम ये डिवाइस जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं और रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, हम गवर्नमेंट के ताबन के साथ इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस डिवाइस को, ताकि जो बेसिक नर्स है वो भी यूज़ कर सके। क्या डिवाइस? सर हम एंकल बनाना चाहते हैं, जिस तरह एक सॉक्सी होगी बच्चे के एंकल पे आएगा वो, और जो उसकी वाइटल साइंस है ना वो मॉनिटर करेगा, उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी आएगी तो वो डिटेक्ट ये बता देगा, ये सेंसर्स बताएंगे एंड उसके बाद उसको कनेक्ट कर देगा। दुनिया में पहले नहीं है सर दुनिया में बेसिकली होता क्या है, एक ICU होता है पूरे दिन। अब वो ICU गिना चुना इस्लामाबाद में और ज़्यादा नहीं गिने चुने वो जो होते हैं NICU दुनिया में वाइटल मॉनिटरिंग की डिवाइस बहुत कम होती है। सर हमारा प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स रिकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज। हमारे जो छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज होती हैं वो बहुत ही जो है वो उनका इनकम कम होती है। हमने ये बनाया कि हमारा आउटपुट हम जो मैन पावर जो है वो कम कर लें, दिस वुड रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग, और इसकी जगह हम आउटपुट जो हमारा बढ़ जाए। हम एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम बना रहे हैं लोगों की बेनिफिट के लिए, ताकि लोग आपस में मिलकर खेलना सीख सकें, टीम में काम करना सीख सकें। टीम गेम, जी चलो ठीक है। ये तो बहुत ज़रूरी है अभी सर हटाएगा पूरा घर ऑटोमेटिक। चलो सर हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, उनके लिए हम डिवाइस बना रहे हैं जो उनकी कंसंट्रेशन बता सके, जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, जिस तरह ब्लड टेस्ट करें एक लैंसेट टू, जिस तरह सिमिलरली टू शुगर टेस्ट जो आप घर पे करते हो उसी तरह आपका ब्लड ड्रॉप आएगा, आप उसको इस जगह रखेंगे और आप सर इसके लिए नहीं है, शुगर के लिए बिल्कुल एग्जिस्ट करता है ये चीज़, लेकिन जो इस्तेमाल हो रही है वो उसका जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है वो हम इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करें जो कि कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छे लेवल से बढ़े। सर ये पेटेंटेबल आइटम है। Assalamualaikum. We have developed a smart prop for early detection of breast cancer. Pakistan is one of the highest rates of breast cancer all over Asia. अभी तो पिंक रिबन का डेट है। Yeah, so we have developed this smart prop for early detection of breast cancer. It has several high-tech sensors embedded in it. क्या ये लेके everybody can do? Yeah, you just have to wait for 2 hours and it detects any form of abnormality in the breast. दुनिया में और कहीं नहीं है। Yeah, it does exist, but not in Pakistan. सर ये 2500 रुपये के करप्शन को गवर्नमेंट सेक्टर को अवॉइड करने के सेंसर के फ्लो को मेजर करेगा। और सर एक्चुअली हम जो है अपने से लेवल पे इसको करप्शन को रोकने के लिए हमने डिवाइस बनाया, पकड़ के रखने वाला वैसे जितना भी पेट्रोल टाइम में जाएगा वो रेटिंग मेल करके मैसेज करेगा और मैसेज करेगा। वेरी गुड, सर हम 10 ईयर प्रोटेक्टिव यूनिवर्सिटी से तो 2 तरह के पेशेंट और एक डम पेशेंट आपको डिफरेंट जगह पे मतलब ये अगर आपका दिल सेंसर लगाते हैं जी सेंसर लगाते हैं, ये गैजेट होगा आप डिफरेंट तरह जो आपको हार्ट अटैक आपको प्रिडिक्ट करना है तो ये होगा। सर ये अपने घर में बैठ के ECG कर सर ये पहले नहीं है। नहीं सर ऑलरेडी सक्खर से ये अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिवाइस है जो अर्ली सिम्टम्स को देख के ये तो एक और लेवल की है। हमने जो है ना इस पर जो है अपने रिसर्च की थी, उसके बाद रिसर्च करने के बाद ये इम्पैक्ट ऑफ पब्लिकेशन में फर्स्ट ऑथर वो जो दूसरे वाले हैं उनमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें ये फर्क वो सिर्फ टेम्परेचर से डिटेक्ट कर रहे हैं, और ये हम जो है ना जो अमेरिकन ब्रेस्ट कैंसर सोसाइटी है उनके जो दिए गए वो सिम्टम्स हैं उनमें और ये 4 से 5 हज़ार जो कि हैंडीकैप लोग भी यूज़ कर सकें और नॉर्मल लोग क्या करेंगे?
बैट्समैन के साथ फिक्स कर लें, अपने नॉर्मल बैट्समैन के साथ कोई भी से वॉइस कमांड दें, वो ये चीज़ खुद ही इर्द के स्पेस में फाइंड करके आप तक वो चीज़ ले आए। चलो वेरी गुड। ये में खड़ा असम जितना से गुजरात से आप सब कुछ बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखी पड़ती है, अर्निंग करनी है, तो इसको रिड्यूस करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करता है। डेवलपर को सिर्फ ये 5 चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, उसके बाद वो अर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत क्विकली हम अपनी जो यूथ है ये तो हम उसमें स्किल डेवलप बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। आप नैपटेक को कॉन्टैक्ट कंट्रोलर से इन्वायरमेंट कंट्रोल करके हमने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जिसमें आप पूरे साल बेमौसम फल जो है वो उगा सकते हैं। हमारा स्लोगन भी ये पूरे साल बेमौसम ग्रीन हाउस। नो सर, ग्रीन हाउस इज डिफरेंट थिंग, वी आर कंट्रोलिंग इट प्योरली आर्टिफिशियल लाइटिंग इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, वो करते हैं ग्रीन हाउस भी करते हैं। ये इनको दे दें माइक। इससे जो हमारा डाटा इकट्ठा हो रहा है इससे हम कोई भी खतरनाक बीमारी या किसी भी बीमारी से डिवाइस जो कि बताते हैं फूड की फ्रेशनेस को बाय डिटेक्टिंग स्मेल की बेसिस पे डिटेक्ट करके बताते हैं कि फूड फ्रेश है। सर ये जो है ये डिवाइस ऐसा बॉक्स है, इट इज़ पोर्टेबल, ये कहीं भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में कैफेज वगैरह में लग सकती है। तो ये $300 की इनिशियल कॉस्ट है, क्योंकि बाहर से सेंसर्स हम लोगों ने मंगवाए हैं एक, लेकिन अगर हम बल्क में मंगवाएंगे तो डेफिनेटली ये कहीं पहले नहीं है सॉरी दुनिया में है कि सर नहीं, इससे पहले सर एडल्ट पेशेंट पे हुआ है या डिजिटल इमेज सर हमने फूड कोर्ट के लिए एक सोल्यूशन बनाया, जैसे आप मॉल में जाते हैं शॉपिंग करते हैं, उसके बाद कोई रिफ्रेशमेंट के लिए फूड कोर्ट जाता है, वहाँ पे आपको एक आउटलेट जाना पड़ता है उनको पर्सनल उनके स्पेसिफिक डील्स देखने के लिए, लेकिन आपको स्ट्रीट को डिजिटाइज कर देंगे। अपने टेबल पे आपको मेन्यू कार्ड नहीं मिलता, लेकिन हमारे इस मार्केट से आपको कोर्ट में जाएं आप पूरा मेन्यू कार्ड मिलेगा। मेन्यू कार्ड मिल जाएगा, ऑर्डर ले लें। ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है। ये पहले नहीं है कहीं। हाँ जी सर हमने फूड कोर्ट के लिए एक सोल्यूशन बनाया, जैसे आप मॉल में जाते हैं शॉपिंग करते हैं, उसके बाद कोई रिफ्रेशमेंट के लिए फूड कोर्ट जाता है, वहाँ पे आपको एक आउटलेट जाना पड़ता है उनको पर्सनल उनके स्पेसिफिक डील्स देखने के लिए, लेकिन आपको स्ट्रीट को डिजिटाइज कर देंगे। अपने टेबल पे आपको मेन्यू कार्ड नहीं मिलता, लेकिन हमारे इस मार्केट से आपको कोर्ट में जाएं आप पूरा मेन्यू कार्ड मिलेगा। और मेन्यू कार्ड मिल जाएगा, ऑर्डर ले लें। ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है। ये पहले नहीं है कहीं। हाँ जी सर हमने एक ग्लोबल हॉटस्पॉट शेयरिंग मैकेनिज्म बनाया है, इसमें ये होता है कि हॉटस्पॉट आप शेयर करेंगे तो जितना आप शेयर करेंगे उतनी आप आपको रिटर्न में वापसी भी करेंगे। वेरी नाइस, गुड, शाबाश। ये हो गया मेरा। चलो जी हो गया, आपका हो गया ना। क्या करते हैं आप? वॉशिंग मशीन। डोमेस्टिक यूज़ में पानी आ रहा है उसको हम रिसाइकिल करके आपको दें ताकि वो आप रीयूज़ कर सकें विदाउट ड्रिंकिंग प्रोसेस। और ये तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा सिस्टम है। सर वो हमने बनाया हुआ कितने का है? 50,000 पर होम, उससे पानी साफ हो जाता है। तो पानी साफ हो जाता है, पीने के लिए नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी आप ठीक है, ओके। वो है फिजिकल एक्सरसाइज को मोबाइल गेम के साथ कंपैटिबल करना। हम जितना तरक्की करते जा रहे हैं, हम फिजिकल एक्सरसाइज से दूर जाते जा रहे हैं। तो हमारा जो इसमें मोटो ये है कि हम मोबाइल गेम के साथ एंटरटेनिंग दें और साथ में उनको फिजिकल एक्सरसाइज नहीं। बेसिकली जो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये चीपर है और हर कंपैटिबिलिटी है इसमें। हमारी यूनिवर्सिटी का मॉडल हमने बनाया हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटी खालिद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रहीमिया खान से हमारे और हमारी यूनिवर्सिटी का मॉडल हम उसका पूरा का पूरा वर्चुअल टूर करवा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी का। हम साइकिल पे बैठ के प्रॉपर उसका वर्चुअल टूर। हाँ जी हम गुलाम साफ़ इंस्टीट्यूट से, और हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हर बंदे का एक ख्वाब होता है कि वो अपना घर बनते हुए देखें। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये कर रहा है कि आपका जो घर सर हम लोगों ने एक ऐप बनाई है जो कि सस्पिशियस एक्टिविटी, अगर कोई आपका पर्सनल कंप्यूटर या आपका लैपटॉप यूज़ कर रहा है तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कि वो बंदा हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जा रहा है या आपकी इन्फॉर्मेशन में घुस रहा है। तो मतलब अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है या आपकी इन्फॉर्मेशन में जा रहा है, और विदाउट नोइंग दैट पर्सन, विदाउट लेटिंग द पर्सन नो वी कैन ट्रैक। सर बेसिकली हमारा आइडिया ये कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे उसको पता भी चलेगा और हमारे मोबाइल पर स्क्रीनशॉट। एक और है सर कि अगर कोई सस्पिशियसली आपका लैपटॉप जो है वो ऑन करता है, ऑफिस में कोई कलीग ऑन करता है या टीचर का कोई स्टूडेंट करता है, तो हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा और हम एट द मोमेंट स्क्रीनशॉट यहाँ से वेब शॉट लेंगे
और आप अपने उसमें लगा रहे हैं। सर फिर आपने वो क्या उसको वाइब्रेट करता है? नो सर, हेड को वाइब्रेट नहीं करता। बॉडी के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो वाइब्रेशन रेट थ्योरी कहती है कि अगर उन पॉइंट्स पे लाइक मसाज करता है तो इससे सिर्फ ठीक होते हैं, खराब तो नहीं हो जाते? नहीं सर, बॉडी के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर उनके ऊपर वाइब्रेशन सर और फैमिलीज में ये ठीक है, इस वक्त ये AFIRL में स्पीच डायलेक्सिया उसको डिटेक्ट करते हैं, यानी कि अगर किसी ईमेल आई है उसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये सोशल मीडिया पे वहाँ पे जो वो जिनका झूठा सर बेसिकली नॉर्मली जो हम ऑनलाइन अद्वैत वगैरह खरीदते हैं वो क्या करते हैं कि कभी कभार हमारी कभी मेडिसिन की प्राइस हाई होती है, जो हमारे पावर जो हमारे पावर प्लांट होते हैं उसमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारी सिटी तक आती है, उसकी जो इंस्पेक्शन होती है वो इंस्पेक्शन टीम को हायर करना पड़ता है हर साल या 6 महीने बाद। तो हम लोगों ने ऐसा ड्रोन बनाया जिसका हम थर्मल कैमरा यूज़ करेंगे और टीवी कैमरा यूज़ करेंगे, जो कि इंस्पेक्शन हमारा। इस ड्रोन में और आम ड्रोन जो मिल रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है? सर ये ड्रोन जो है हमारा 3 kg कहते हैं वेट उठा सकते हैं। इसका जो थर्मल कैमरा लगे उसको सर कम से कम 800 ग्राम। तो मेन चीज़ ये है कि आम ड्रोन्स के मुकाबले में इसमें थर्मल ड्रोन कैमरा सर वो लगे, थर्मल कैमरा लगे। और ये टेस्टिंग भी कर सकते हैं। पर एप्लीकेशन बैटरी यूजेस बता रहे थे कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन कितना यूज़ करें। यही आइडिया हमने आपके घर पर इम्प्लीमेंट किया, जो आपको बताएगा कि आपका AC, आपका रेफ्रिजरेटर इसमें कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है। इस तरीके से आपको शो होगा कि इसका रीड आउट किधर आएगा? ये आपका मोबाइल ऐप पे आ सकता मोबाइल पे आ जाएगा। इस तरीके से आएगा कि अगर सो आई कैन सी ऑन माई मोबाइल से जो है इसमें कितना बिल ले रहा है, बाकी चीज़ें कितनी ले रहा है। सर अभी तक ईच डिवाइस के लिए नहीं है, कंबाइंड डिवाइसेस के लिए हम लोग ने एक डिवाइस के लिए। चलो शाबाश, शाबाश शाबाश शाबाश। बस ये टच ओनली 2 minutes every। हाँ जी आप So they are from Pakistan. Our project is about a smart city, which is focusing mainly on the traffic system. While you are so many times you have focused that while you are looking for the meetings, you are having so many conditions and delay in the traffic system. To overcome on those issues, we have already implemented a number of methods to recommendation system. जो इमेज कैप्चर करेंगे हम लोग मोबाइल कैमरा से, जो डीप करेंगे टेक्नोलॉजी चल रही है उस एनालाइज करके फार्मर की जो प्लांट में जो बीमारी वो उसको आइडेंटिफाई जी प्लांट उसको एनालाइज करेगा मॉडल और बताएगा कि इसमें ये बीमारी है और जो रिसेंट बेस्ट सोल्यूशन है उसके लिए मौजूद है वो बताएगा ताकि फार्मर्स की एग्रीकल्चर जी ताकि पाकिस्तान फार्मर्स इकोनॉमी। आपका क्या है? बेसिकली हमारे ऊपर प्रोजेक्ट्स नहीं बेस है हम लोग बेसिकली एलईडी के थ्रू एलईडी के थ्रू एलईडी है इसके थ्रू ये फोटो सेल है उसके ट्रांसमिशन कर रहे हैं ऐसे तो यहाँ पे फ्लैश नहीं होता ठीक है। तो सर यहाँ पे हम ऑडियो ट्रांसमिट कर रहे हैं बाय यूजिंग एलईडी, सिंपल एलईडी का इस्तेमाल करते हुए कि हम ऑडियो ट्रांसमिट बजाय उसके USB वगैरह बाय की बजाय USB वाईफाई में यूज आप क्या कर रहे हो? किसी को पता ना चल जाए। क्या कर रहे हैं? ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर आपके हिसाब से आपको इसके फ़ायदे ये हैं कि जिससे पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म का घूमने तो जो नए लोग आ रहे हैं पाकिस्तान के बारे में एक कैमरा और एक डिवाइस
कितने का होगा? सर ये ऑलमोस्ट सब कुछ मिला के आपको ये डिवाइस जितनी एक्सपेंसिव होती है जो अराउंड 2000 तक पड़ जाती है 3-4 आपको ये 6000 का सब कुछ हो जाता है 6,000। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट आपको सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करेंगे अपनी मर्जी के हिसाब से तो वो इसको प्रिंट कर कोई भी डिज़ाइन होगा वो हम प्रिंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स तो इधर यहाँ पे स्टूडेंट्स सारे वहाँ उन्हीं में से विनर अनाउंस होने आज कितने हैं? सर आज ही हमने इनके रिजल्ट रोके हुए थे तो अभी कर लें अभी विनर अनाउंस करेंगे एंड ऑफ डे बस तो फिर Settle down, everyone. सर पूछ के बताएं आबिद अभी बताते हैं
All right, can I have silence, please? Could I please have silence? Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, our Federal Minister for Federal Education and Professional Training, plus Federal Minister for National History and Literary Heritage, Mr. Shafqat Mahmood. Honorable Chairperson, Higher Education Commission, Dr. Tariq Banoori. Country Manager, Microsoft, Mr. Abid Zaidi. Education and government sector officials, our esteemed partners, guests, university students and representatives, all those students who have done their projects, and members of the Microsoft family. Assalamu alaikum to you all. I'm Taimeen Sayyed, Project Lead for Higher Education Commission in Pakistan, and I warmly welcome you to this prestigious event of Microsoft Imagine Cup National Winners Announcement 2019. I would especially like to thank the teams and everyone else who has traveled from different cities and regions to be a part of this event today. I would like to begin this event with a recitation from the Holy Quran. Qari Muhammad Salim Saab, please step forward to begin the program in the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Rise all for the national anthem. Shafqat Saab, you had a look at the projects outside with Tariq Saab and Abid Saab also. I would really like to request you to please come forward and share your views as to what you think about them, the quality of the projects, and what kind of work that you appreciated outside. If you could say a few words.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dr. Tariq Banuri, Vice Chancellors, teachers, professors, students, ladies and gentlemen, I am very grateful to Dr. Tariq Banuri for inviting me here and giving me this opportunity to see this tremendously innovative work done by the students. मैं थोड़ा सा माजरत खा हूँ डॉक्टर साहब आपसे, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा इवेंट है और इसमें इतनी वसी पार्टिसिपेशन है और पाकिस्तान भर से लोग इसमें आए हुए हैं और इसलिए मैंने तो एक और इवेंट रख लिया था, इसलिए मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना है, उसके लिए मैं आपसे माजरत खा। लेकिन बहरहाल ये आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी सम ऑफ द वर्क आउटसाइड, रियली इट वाज क्वाइट ब्रेथ टेकिंग, दैट्स द वर्ड आई वुड यूज़, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतनी मेहनत से और इतने इनोवेटिव तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे ऐप्स मुझे नज़र आए जो कि इमीडिएटली जिनकी एप्लीकेशन भी हो सकती और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हमारी जो अगली जनरेशन आ रही है, बल्कि हमारे पाकिस्तान में एज ए होल बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मेरा ख्याल है कि जिस शोबे में भी मौका मिले तो टैलेंट जो है वो खुल के सामने आता है। वो क्या कहा था इकबाल ने कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, ये नमी की ज़रूरत थी मिट्टी को। और इंशाअल्लाह ताला अब जो टैलेंट नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि जो होना चाहिए था, जो एक माहौल बनना चाहिए था, वो बन रहा है। और इसमें मैं डॉक्टर तारिक बरूरी और हायर एजुकेशन कमीशन को मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपना रोल जो है वो बहुत एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। और ये जो इस किस्म के, और मेरा ख्याल है कि बड़ी ज़्यादती होगी अगर माइक्रोसॉफ्ट का शुक्रिया अदा किया जाए। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही, क्या कहना चाहिए, मशहूर ज़माना तो है ही, लेकिन बहुत ही आला दर्जे की इंटरनेशनल कंपनी है। और इन्होंने जो इस कंपटीशन को इनकरेज किया है, ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। और ये और मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स इस बात पे खुश हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। और हम भी खुश हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपनी हुकूमत की तरफ से कि हमारे लिए जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हायर एजुकेशन में है, वो चैलेंज ये है कि हमने अपने मेयार को बेहतर करना है और इसको हर डिसिप्लिन के मेयार को हमने बेहतर करना है। उसमें ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स हैं और नए नए डिसिप्लिन्स निकल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, कोडिंग आ रही है, बड़ा कुछ आ रहा है। तो इनको हमको इन सब की मेयार, सब की क्वालिटी को बेहतर करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज। और दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि हमने अपने तालीम को रेलेवेंट बनाना है, यानी कि हमारी तालीम ऐसी हो जो कि जिसका एक खपत भी हो, जिसका जॉब मार्केट में एक लिंकेज हो। ये ना हो कि हम स्टूडेंट्स को या ग्रेजुएट्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिलती या वो एम्प्लॉयबल नहीं है। तो ये भी बड़ा चैलेंज है हमारी हायर एजुकेशन के लिए। चैलेंजेस तो और भी बहुत हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक बरूरी ने अगले दिन हमें उनकी पूरी तफसीलात बताई थी, लेकिन मैं तो सिर्फ 2 का जिक्र कर रहा हूँ। और इस किस्म की कॉम्पिटिशन्स जो आज मैंने देखी है, ये कंपटीशन ऐसी है जो कि हमारे तालीमी मेयार को उठाएगी और उठा रही है। अब सस्पेंस तो बहुत है जिन बच्चों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है कि कौन विनर होगा, कौन विनर नहीं होगा। मैं तो उस सस्पेंस को देखने का और उसका नतीजा देखने से महरूम होऊंगा, लेकिन बहरहाल जो भी जीतेगा उसको बहुत बहुत मुबारकबाद। और
इंशाअल्लाह ताला आप ही में से वो नौजवान बच्चे बच्चियां वो पैदा होंगे जो हमारी अगली जनरेशन के लीडर्स होंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। सिर्फ एक लफ्ज़ में छोटा सा एक दो जुमले कि आपको पता है कि पाकिस्तान को कितने चैलेंजेस हैं और आपको पता है कि पिछले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में किन चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना था। हमें सबको मिल के दुआ करनी चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का कि हम इन चैलेंजेस में सुरखरू हुए हैं। और ना सिर्फ ये कि हमने उन चैलेंजेस का दिफाई तौर पे मजबूती से मुकाबला किया है, लेकिन जब हमने अपनी बरतरी साबित कर दी तो हमारे वज़ीर आज़म ने और हमने पाकिस्तान ने जिस फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया वो भी एक अपनी मिसाल आप है। तो उससे एक जो तब्दीली दुनिया में पाकिस्तान के बारे में आई है और आ रही है वो भी काबिल दीद है। तो इसलिए आप सबको विनर्स को मुबारकबाद, सबको हम इंशाल्लाह एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं और ये नया दौर पाकिस्तान के लिए बेहतर और अच्छा दौर है और इंशाल्लाह इसमें हम सब अपना हिस्सा डालें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। Sir, I'd like a minute of your attention. Shafkat Saab, I'd like a minute of your attention, please. I'd like to bring it to your notice that this has been happening for the last 10 years. और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने मैस कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके इसको ऑनलाइन टेलीविज़न के ऊपर सारे इमेजिन कप को ऑन एयर भी किया एंड पीपल फ्रॉम होम एक्चुअली वॉच द होल कॉम्पिटिशन देयर. So these universities are Lahore Garrison. I'm sure they would like you to know. SMIU, Lahore Garrison, University of Balochistan and Zabist. And I would like Banuri Saab to actually give you a token of appreciation. Thank you so much. Thank you. Kindly remain seated. Give us a second. All right, since he was committed, he had to leave a little early. Let us resume the program, Ji. This program is for the students, for your recognition, so bear with me. The first thing that I'd like to do is, there's a musical band here today who wants to perform live. The students of Lahore Garrison University, under the direction of Professor Dr. Amir Mahmood Bajwa, Chairman Department of Mass Communication, LGU, has produced a special theme song of Imagine Cup 2019. It's the first time something like this is happening, which speaks for unity and togetherness to make this world a better place to live. Put your hands together for Abul Hassan, Haider Bahadur, Mir Ahmed Hassan, Muhammad Shayan, Alistair Ijaz, and Faik Ahmed. Please come up on stage for the performance. Oh, hello. Let's all we dream to make this world a better place. Let's all we believe together we can win this race. This earth it works but more than what we do. The sky is high but no more than a dream. So start where we are, use what we have, build what we have.
make this world a better place. Let's all we believe. Together we can win this race. The stars are far, but we have got a race. The spark in the heart will light up all the skies. So imagine with your mind. And together forever we can do it. With your mind. And together forever we can do it. With your mind. And together forever we can do it better. And together forever we can do it better. So imagine with your mind. Together forever we can do it. With your mind. Together forever we can do it. With your mind. Together forever we can do it better. 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 And together forever we can do it better. Amazing performance by LGU. Please give them a big hand. All right, for the welcome note, I would like to invite Country Manager Microsoft, Mr. Abid Zaidi, to please come on stage and talk about Pakistan's active participation with respect to this event. I can tell I'm going to have a very tough time engaging you after this performance. Honorable Chairman, Dr. Tariq Banuri, respective Executive Director, Vice Chancellors from esteemed universities. Okay, I think I cannot use this. Teachers, faculty, students, Assalamu alaikum and welcome to the National Finals of Imagine Cup. I'll just say a few things. I know everyone is waiting for the winners to be announced, but just a few things which I think are very close to my heart. And there's a reason for this investment that Microsoft is making, and alongside HEC, and making this effort to make it happen every year. And there is definitely a reason. So I'll just go back a few steps and share with you what we are really doing here. What is the need for this? It's not just run-of-the-mill kind of competition, which we keep doing, distribute prizes and go back home and back to our universities. Digital transformation is an indisputable force. And right now, there is we are revolutionizing our industries. There is transformation happening. There is transformation happening, with products transforming. We are redefining the services, and we are also reshaping the way we work, and not just work, but also how we play. Microsoft's mission, the global mission that we have is and which is very clear, which is to empower every individual and every organization on the planet to achieve more. And this mission has a lot of depth, and innovation is at the very heart of this mission. And it also has, kind of growth mindset embedded in this thinking, which starts from the cultural shift. The cultural transformation has to happen. It's not just about technology, coding, or a few 21st century skills. It's about having the ability to learn new things, apply, and create an impact. Just a few examples, because I think it always helps to take examples, because it will kind of give you an idea how quickly the world is changing. And it's just like, change is happening, but sometimes we don't feel it. And then suddenly we are faced with the situation. Last time when we launched Imagine Cup, I was talking about industrial revolutions.
And I talked about the first industrial revolution and second and third. We didn't have a chance as a country because in the first industrial revolution, Pakistan didn't even exist. But I think this is really an opportunity for Pakistan because in this fourth industrial revolution, when we talk about artificial intelligence, machine learning, mixed reality, Internet of Things, big data and analytics, so on and so forth, 3D printing, driverless cars, we have an opportunity. And the reason why I say we have an opportunity is because we don't need a lot of capital. We already have a lot of human capital. We already have a huge, which can possibly become a youth bulge, but we've got a huge youth population out there. And all we need is to learn skills and use our talent, hone our skills, and have some tangible skills. Just like people playing instruments here, that's a tangible skill. So going back to some of the examples that I wanted to use, kind of sharing with you how quickly times are changing and how quickly the transformation is happening. And let's start with Microsoft's journey. So we as a company, a global company, which is almost a $100 billion company with more than 100,000 employees globally, we started a transformation a few years ago. And we made a conscious effort. And the effort was that what we have today and what we learn today has to be relevant tomorrow. Until 5 years ago, we were a company. So I've been with Microsoft 10 years now. So I started off with the basic account management, then moved on to become a segment lead, and then country manager. I know the times when we would just go and sell software. So the whole supply chain looked like there was a CD which would get shipped from somewhere, it'll be received here, there'd be software on it, you put in the CD drive, you install the software, you configure it. On the other hand, you'd bring in hardware, you'd commission it, and then you would eventually deliver a service. And this is the capability organizations need. They are not interested in getting a software, putting a CD, installing a software. So in the last 5 years, what has changed in Microsoft? There's a lot of word around cloud computing, global cloud platforms and setups, which we call innovation hubs. Microsoft transformed its products, which I initially talked about, how products are transforming, how services are being redefined. Now, if you are someone who needs communication and collaboration, I'm not going to come and tell you, take the CD and go and do whatever you want to do with it. We'll say, we'll give you email system. We'll give you storage. We'll give you security around it. All you have to do is start using it. And not to make your company work. Same is the case with, instant messaging, voice communication, video conference calls, enterprise resource planning. Everything has gone to cloud, and the way the product has transformed is the very core of what we did and why the product transformed was that there are businesses. There is a business which is oil and gas. There is a business which is manufacturing. There is a business which is textile. Software coding and installation is not your business. You want capabilities to run your business, so we come in and we say, take our software as a service. So this is software as a service. And same is the case with platform as a service. There were times I remember probably 20 years ago when about 18, 19 years ago when I started my career, there was a word around, let us make our own operating system. Let us make our own this and that. It's not just about inventing something from scratch. It's about innovation, and innovation is different from inventing something. Innovation is there's something there, you bring in a value add on top of that, which would eventually give benefit to the people. So just a few more examples. Let us understand that all these projects are not just projects, and it's not just a competition. So competition would happen. We'd have one winner. We'll also invest, just like last year we did in case of HEC. It was a brilliant team. And Jaydeep Saab is sitting here. Thank you very much for your active participation. I'd encourage all the universities to do it.
We would, it's happening in Austria, right? Amsterdam. And we'll sponsor. But, the buck doesn't stop here. All the brilliant projects that even Minister Saab talked about, don't stop it there, because there is a huge market for it. We are trying to solve some real world challenges. You need to continue with it. You need to keep at it. Don't stop it there. I mean, we're going to be having Imagine Cup hopefully next year as well. But then it doesn't mean that, that these projects are just for that competition. There are two projects I would want to share, and just to kind of let you know, how they're making an impact. And before that, I also wanted to, since I started my discussion around digital transformation, I was reading this, like MP3 format when it came. And how many people know MP3 format? Okay, so almost all of us. So I don't remember the exact figure, but it was a multi-billion-dollar figure, where in the US alone, it was a multi-billion-dollar market, just the CDs, when they were being sold. So when MP3 format came, and generally a regular CD would have 10 to 15 songs in it, or tracks. When MP3 came, the whole idea around just selling CDs or selling music through CDs vanished over a period of time, because that MP3 format had a very small footprint. You could put in a USB, you could kind of transfer it through internet. And even if you put in a CD, you would be able to get like 200, 300 tracks. And then suddenly that huge market, which was a multi-billion-dollar market, vanished. We have example of Kodak, used to make cameras. And who knew that one day, there would be cell phones which would be able to take pictures. Again, if Kodak at that time knew that this is where the world was going, they would have probably started making phones, or would have done something else. So coming back to the local scene, I would want to mention, probably these people don't even know I'm talking about it. Sehat Kahani is a brilliant initiative. It's a project. Before I talk about the software itself or the service, we see in the medical universities, the enrollment of female students is very high. But we also know this trend that a lot of these female students don't go out and step into the professional world. They go home and probably they don't get an opportunity, and obviously everyone has their own priorities. So these two doctors, female doctors, they started this initiative called Sehat Kahani. It's obviously, they're using technology there. But what it does is that it basically provides a connection between these doctors who are by profession doctors, or academically they have studied medical. They connect to the health centers. And they basically, through Skype and different technologies, they get in touch with the patient there, and they provide service. Now, just look, and this is exactly the impact that we're talking about. You got educated. Sometimes, Minister Saab talked about, some people get educated, but they don't have a job. There are some people who are getting educated, but they don't want to do a job because they think their priorities are different. So how can technology be used to provide that opportunity to these female medical students to exercise their skill that they have learned, there's a 4-year degree or 5-year degree. So these are some of the things where technology is playing a role. We have, when I talk about the real world challenges, whether it's water access, clean water, potable water, waste management, health, education, distance learning, education has really changed the entire dynamics. Just a minute more on Imagine Cup. I think last year we made a great progress compared to the last 10 years since the time we have been doing Imagine Cup. We have seen more projects coming in. There's more participation. The quality of projects is very good. This year, my expectation is very high. Not just because we just want to go and win the global finals. Yes, obviously we want to do it. But we need role models in this country, and there could be no one better than our own students who kind of become trailblazers and become role models.
So with this, without taking more time, I would want to wish all of the participants, you have already won since you have participated in this. May the best team win who have put in efforts. And I would want to request all the VCs and the faculty and students, in fact, some of the teachers met me, and they're very passionate about it. And they spend a lot of time with students, and I think in that case, wherever there were teachers and mentors, it really made a difference. So there's a big request from my side, from the VCs and the teachers, that please join hands with us and make it happen. Thank you very much. Thank you, Abid sir. Now I'd like to request Mr. Gibran Jamshed, Country Education Lead, Microsoft, to please come forward for an overview of Imagine Cup 2019 drive. Gibran sir. Honorable Chairman, Higher Education Commission, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. So, can you play my presentation over there? Okay, great. Okay. No, it has to work. So as Abid briefly mentioned about the change and the digital transformation and the journey where we are heading, so I wanted to showcase some of the examples. And this is where digital transformation today is creating a big impact in the industry across the globe. So you talk about industries. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ साल पहले जाके म्यूजिक के लिए CDs और MP3s खरीदते थे? And you don't do it today. SoundCloud, Spotify, they have replaced the concept of going and buying that CD. Cable network across the globe is being challenged big time by Netflix. You don't have to wait for a printed newspaper or a magazine to know what is happening across the globe. Let's talk about banking. I don't even have to go to the ATM machine today. Everything is happening on the mobile phone, and everybody is doing it. Digital payments, micropayments, life is so easy. And at the end of the day, this is what digital transformation is all about. Everything is running, the backbone is on the cloud. And that's the main theme, and I think a lot of projects, and today when I took a look around all these projects, 45 plus projects, they were actually right on the spot on the theme of this digital transformation, which we will discuss in a few minutes. Right. Digital transformation ki agar aap aur detailed example le, so you would also find the largest taxi company on the planet, they don't own a fleet of cars. You talk about Netflix, it's the largest cinema provider, movie provider. It does not own any of its movies. You talk about Facebook, it's the largest content provider, the biggest media house we have. It does not create any content on its own. We create it on Facebook. इसी तरह से आप Microsoft Skype की बात करते हैं, Abid mentioned. Today Skype is contributing to literally 3 billion minutes of calls per day. 3 billion minutes of calls per day. And at Microsoft, we don't have any telecom infrastructure to run this. You talk about the largest hotel chain, Airbnb. It does not have a fleet of its hotels. This is what digital transformation is all about. And when we take a look, this is the classroom of yesterday. और आप आज अगर learning पे जाएं, how learning has been transformed across the globe, this is where you would find that the largest learning platform which exists, which is YouTube, it does not employ any teachers. The largest lesson provider, it does not have any classrooms.
which is Khan Academy. You talk about sites like Coursera and edX. They are providing online courses. They are just working like universities. You talk about student loan services. They are just operating like banks. And they are not running in a traditional way. However, they are creating the biggest impact we have had created. And these are the same lines, I think, on which our finalists and all these teams have been thinking around across the year. And today we are seeing some of the fantastic projects which have happened in the country, and they are here being showcased. हम अगर आज से 10 साल बाद की ऑडियंस की बात करें, when we say class of 2030, and by class of 2030, we are talking about people who are fidgetals. These are those people who cannot literally distinguish between a cyber object and a physical object. Thanks to AI, mixed reality, quantum computing, and all these things. So change is there, and change is inevitable. We all agree to it. But landing the change in a right way is something which is very important. How many of you know the QWERTY keyboard, QWERTY, जो हम use करते हैं अपने phones पे, laptops पे, why we use in this particular format? And why we don't use it in a format like A, B, C, D? So this is how typewriters used to work. And you can call it a theory or a myth, because there's a split view in the industry on this one. But a big view on this topic is that when typewriters were invented, this QWERTY sequence was generated to hurt the productivity of the typist. Because if they're going to type so fast, it was a mechanical device, uski keys jam ho jati thi. But when we left the typewriters, or when we switched on to the keyboards and to the soft keyboards, we never changed that format as an industry. And still we don't have any answer why we use this QWERTY keyboard. So yes, digital transformations are happening, but when you will take a look, a lot of high profile digital transformations are also failing because the change is not landing in a right way. So when we talk about the concept of class of 2030, aaj se 10 saal ke baad, how would the industry look like? And this is where I wanted to share some of the facts and stats with you. Why technology? Why technology-related skills? Just because digital transformation is defining the industry. 65% of the graduates in next 10 years down the road, they'll be doing those things which are not even invented yet. Literally 50% of the jobs in 10 years down the road, they'll be lost to automation. This is where new jobs and new industries will be redefined. 7 million jobs will only be created in IT industry in next 3 to 4 years down the road. Today, we are only meeting 33% of the demand of technology-based employers, and they are not finding the right talent across the globe. And close to 80% of the jobs in future, they would require significant technology skills. This is where the industry is heading, and that's the reason we land programs like Imagine Cup to foster thought leadership and innovation in Pakistan. So Imagine Cup, as many of you have participated, dream it, build it, live it, solving the real world toughest problems with the help of technology. And 45 plus projects which are being showcased today, people who are the national finalists, are an evidence of this theory that whatever you have thought, you have delivered on it, and you can do it. So I would want to play a quick video sharing this drive of Imagine Cup, how we took it forward. Imagine Cup is an annual competition sponsored and hosted by Microsoft Corporation with the collaboration of Higher Education Commission. Assalamu alaikum everyone, my name is Duran Nayab and we are live from Lahore Garrison University. Now what do we have here?
One idea starts the journey. That's the motto that will be echoing throughout the journey for the students for Microsoft Imagine Cup 2019. Which brings together student developers worldwide to help resolve some of the world's toughest challenges. It is considered as the Olympics of technology. Started in 2003, it has steadily grown in size with more than 358,000 competitors representing 183 countries and regions, and now have taken a position all over the world. Imagine Cup is a global competition that empowers the next generation of computer science students to team up and use their creativity, passion, and innovation of technology to create applications that shape how we live, work, and play. Every year, tens of thousands of students from across the globe compete for cash, travel, and prizes, and for the honor of taking the Imagine Cup. Now, Imagine Cup has been echoing in Pakistan regions as well. Regional finals were held in different specified sectors and regions, in which the prominent ones are Regional Finals Karachi, Regional Finals Islamabad, Regional Finals Quetta, and Regional Finals Lahore. I think the main thing is, as they've given an idea, I think it's an interesting idea. My inspiration is success. Success is the inspiration itself. It's not LGU, it's Pakistan. This is an amazing opportunity for the youth of Pakistan to participate and utilize their imagination and their passion towards creating technological solutions and to compete to win great prizes. How many sales are you targeting for a year? Month के अंदर हमने इसको 12 targets रखे हैं. This application will be installed on the Android phones. इम्पैक्ट होता है कि स्टूडेंट की क्राइटेरिया जो स्टडीज़ को लेकर वो बिल्कुल चेंज होता है इसका। तो बगैर किसी मोटर में पुलिस की या किसी के वो अथॉरिटी को पता चल जाएगा कि गाड़ी ओवर स्पीड है। Include for dialysis patients include sodium, potassium, phosphate and creatinine. It is hoped that the platform made available through many efforts will help students of Pakistan in recognition of their innovation, ideas and related projects. Acha ji, now the interesting part. What were the results? Not of the projects, but of the drive. And I think which is very pertinent as well, कि हमने as a nation, as a country, what we achieved together. So ये बहुत important है. So when we started the drive a few months ago, as a result of this drive, 50 plus universities participated in Imagine Cup 2019 this year in Pakistan. And obviously there were programs and events which were run across these universities, so I'm not going into the details, but I just want to share 6,000 से ज़्यादा बच्चों ने इस साल Imagine Cup में participate किया पाकिस्तान से और register किया. If you take a look on the landscape, so you would find इस साल हमने the number of projects which were actually qualified, the number of teams into this Imagine Cup 2019 from Pakistan, there were 306. 306 projects or teams जो हैं वो आई सामने हमारे पास. And this number, if we compare it with the previous year was the record-breaking year, जहाँ पे हमारे पास 99 projects आए थे in the record-breaking year in Pakistan. And this year we have got 306 projects as compared to those 99 projects. So we had judges, respected judges from industry, academia, and across the corners of the community who spent a lot of time in evaluating these projects, so we are very thankful to them. So regional finals, they were conducted across 4 locations in 4 regions, the way HEC defines them. So they happened in SMIU, University of Balochistan, Zabist, and LGU. So out of these 306 projects or teams, 45 plus teams, they went ahead into the national finals. जो आप आज यहाँ पे बैठे हैं, so you can be very proud because this is a subset of those 6,000 people who participated in Imagine Cup 2019, and you are here representing Pakistan. So the story doesn't end here.
जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर हम क्वालिटी के बेंचमार्क्स के ऊपर भी आए. So I also want to acknowledge the top 5 participating universities in this year Imagine Cup. So Lahore Garrison University took the lead by far. Then followed by Mehran University of Engineering and Technology, Virtual University, Behria University, and Fatma Jinnah Women University. Okay. Now, अच्छा ये projects जो थे, and I would take 2 minutes on this one. ये database, library का system, hotel की reservation का system, ये वो projects नहीं थे. These were the projects which were qualified in the category of digital transformation. और ये जितने भी projects बाहर लगे हुए हैं, you can take these projects and fit it in one of these categories. So there are a lot of projects which are heavily using machine learning and deep neural networks. And you know who these projects are. Then we have projects which are on virtual reality and augmented reality. तो जो mixed reality का हम concept देखते हैं, वो concept भी हमने implement किया in projects में. We talk about IoT and smart homes. Yes, it is happening. It is happening right outside the door. And then artificial and robotics, these technologies were also there in the projects. Technology is obviously one driving component. Fourth industrial revolution की, digital transformation की technology का होना बहुत ज़रूरी है. But then when we talk about the application, so you would find these projects are helping the health industry, agriculture industry, civil engineering industry, agricultural industry, environmental industry, food industry. So this is how all these projects are scattered. And they are, जैसे मिनिस्टर साहब ने भी मेंशन किया, ये इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी लाइव हैं, किसी का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, किसी का पायलट डिप्लॉयमेंट चल रही है, किसी को फंडिंग मिली हुई है. एंड देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स व्हिच आर नीडेड टुडे to solve the real world toughest problems of Pakistan. And these projects, with the help of HEC, Microsoft and the industry, they should see light of the day. This should be our commitment at this August forum. अच्छा, पाकिस्तान में we broke our own records. 2018 में 100 projects, 2019 में 300 projects, best in class projects. But where do we stand today on the landscape of the region or the entire world? Because there are hundreds of countries which are competing into Imagine Cup. So this is also a reality check, and I want to share a few quick slides on this one, bullets on this one. So because अभी हम participation की बात कर सकते हैं, हमारा जो winner होगा पाकिस्तान का, वो एम्स्टर्डम में इंशाल्लाह भी compete करेगा in few days down the road, and this is where we'll see the results. So I cannot comment on that part, but I can comment on the drive and the participation part, because वो numbers हमारे पास आना start हो गए, हमारे region से भी and from different markets as well. So I want to share on this one. North Africa, East Med in Pakistan, that's a cluster of 13 countries, जिसमें पाकिस्तान Microsoft का part है. And we are the top participating country out of these 13 countries. Middle East and Africa is a very big market, close to 80 countries, and Pakistan is part of those 80 countries. And we are the 4th highest participating country in those 75 to 80 countries. So even जो हमारी drive है, जो participation के results हैं, they are also landing well on the global landscape. And our luck wishes are with the team, जो जाएगी पाकिस्तान को represent करेगी, and we'll be announcing the winners shortly. So with that, I want to close my presentation. But again, you have seen this big show running here, and it will be like a little harsh if I would not thank a list of few people from Higher Education Commission who have really spent days and nights for last many weeks to make sure that this lands in the right way. And the first and foremost is Chatha Saab. And then I will quickly go through the list. Mr. Naveed, Mr. Faisal, Mr. Saria, Mr. Tanveer, Mr. Ilyas, Mr. Rashid, Mr. Shigri, Mr. Fawad, Mr. Sharik, and Mr. Tawqir. Thank you very much. As I discussed earlier, this time around we did it a little differently.
HEC launched its education television, and I'm proud to say I've personally met parents जिन्होंने वो सारा competition, because we could not have everybody in one single room where the entire competition was taking place. So different universities में वो हो रहा था, 4 different universities में, जिनको हम further recognize भी करेंगे, और वो सारा कंपटीशन पेरेंट्स ने भी लाइव देखा. मैं चाहूँगी कि आप लोगों के जितने भी छोटे छोटे क्लिप्स का एक हमने एमल्गमेशन बनाया है, वो जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, 2-3 मिनट्स, वो आप देखिए. इमेजिन कप 2019 फेज 1 की जो पहली टीम अपने प्रोजेक्ट के साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद है. It damaged the blood vessels of the light sensitive tissues at the back of the eyes called retina. असल जो हमारा पर्पस है वो सिर्फ ये है कि हम जो हमारी जो We are very passionate about stopping cyberbullying at the very source, at the very beginning, where it starts. हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है वर्टिकल फार्मिंग और हमारी टीम का नाम है हार्ट प्लेस. My project is online biometric attendance system. है और फर्स्ट टीम का थोड़ा सा तारुफ कराती चलूँ. ये है कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से शहरोज अली और अस्सलाम वालेकुम. My name is Ansha Bey and I belong to NUST. And I'm here to represent my project named Foodie Knows and Food and Beverages. Used by the deaf. So we are working on this. The parameters जो कि हमारे cost structures के अंदर हैं, this is the final जो हम लोगों के mind में. So far we are working on that. हमने कुछ sensors outsource किए, तो this is a price जिसके around हम ऐसे में मल्टीपल फीचर्स हों, आप लोग लेसर रिग्रेशन लेते हैं, क्या होगा उसमें आपको ऑटोमेटिकली जो आपके फीचर्स होते हैं उनको ड्रॉप कर देता है. 2-3 भी उनको सिखा सकते हैं. ये तो हम लोगों ने अपने डिफरेंट डायमेंशंस एक्सप्लोर करने की कोशिश की है. ये है नहीं, बट इट्स नॉट अबाउट कि जी इसमें कौन जीता या हारा. एक्चुअली ये सारे विनर्स अपने आइडियाज लेके आते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, उनको मोटिवेशन तो मिलती रहती है ना यार. यस एग्जैक्टली. क्या आप उसको इमेजेस भी दे रहे हैं? With immense pleasure, I would like to express my feelings कि मुझे बहुत खुशी और फ़ख्र है कि हमारे बच्चे इस ग्लोबल इवेंट इमेजिन कप पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और हमने ये प्रोग्राम, हम सब घर वालों ने ये प्रोग्राम पूरी एक्साइटमेंट से जो है एजुकेशन टीवी पे फॉलो अप किया है, और मेरी दिल से दुआ है कि हमारी कोई ना कोई टीम इस ग्लोबल इवेंट को ज़रूर, इस इमेजिन कप को ज़रूर जीते. Thank you very much for your participation. This thank you goes out to all the students who've worked really hard to reach here. Now I'd like to invite Mr. Asif Khan, IT Consultant Higher Education Commission. Please come and express his views regarding this initiative and let us know how differently we handle things this year. Honorable Chairman, my Microsoft colleagues, everyone here, Assalamu alaikum. I have a pretty long, speech sort of prepared, but I think in the interest of time, I'm going to sort of cut through and just talk about the interesting bits. One of the things that I wanted to share with you guys is that I'm not sure if you know this, but 173 years ago on March 7th, something very interesting happened. Does anyone know what happened in 1846 on March 7th? Or, okay, so 1840. That was the day that the U.S. Patent Office, issued Graham Bell the patent for, I'm sure everyone knows this, right? The telephone itself. Right, so innovation, invention has been happening for hundreds of years, and it just never stops. It's just a cycle that just keeps on going, and it was great to see some of the projects today. I hope you all got a chance to walk around the stalls, talk to some of the students, see the brilliant minds that we have in Pakistan, and some of the really interesting things that they're working on, and. Innovation is not just about technology. It's really about how you take
technology and solve real world problems with it. And I was really impressed to see, you know, how we're using this for agriculture. There's some projects out there that were on display that were looking at health. There's security and of course gaming, which is my son's favorite. So you know, it would be great if we can get some content for gaming coming out of Pakistan as well. In one of the videos, you know, I think someone had said it's not about winning, right? And you know, that's the real message that I want to get across to you guys. You know, this whole event is really not about the competition. This whole event is about what you learn from it, right? The experience that you've got. You had to come up with an idea. You had to build a product. You had to develop a business plan. You know, some of you I saw had actually put on a suit. You know, these, you know, you had to present in front of an audience. These are real world skills, and this is what a competition like this actually brings. It is not about winning at the end of the day. It's what you learn from it. So please make sure that you do take some time and reflect on what you've gotten out of this process. As most of you know, the Imagine Cup this year was not just about technology. We decided to experiment a little bit. We started leveraging the EDU TV platform and broadcasting this live. And I think this was great, especially for me, because I couldn't be everywhere in terms of the regional finals. And I was able to tune in and see what was going on. So I think that was fantastic. Now, the other thing that is not very obvious is that, you know, this also gave an opportunity for a lot of the media departments in these 4 universities to really get involved, right? You know, they really don't have that much content to play with, and this competition itself generated a lot of content that they were able to leverage and put on display. So I'm sure they've learned a lot from it as well, and they're going to walk away with that experience. So the other thing that we were talking about initially is just the industry and academia linkage. This is another thing that this competition helped strengthen as well. We had a lot of judges, I'm not going to name them all, from the industry who got the opportunity to interact with you guys and for you all to learn from them in terms of the questions that they would be asking you. So just to keep it short, I do want to recognize, you know, the Microsoft team. There's a lot of logistics, of course, our team as well, but there's a lot of logistics that went into this process, and there's a few people that I really want to give a shout out to. It's Tameen, who was just on stage, Sheikh Rizwan, and Gibran. So I appreciate all the effort that they put into this. I also want to thank the chairman for his support throughout the entire process. You know, when we first walked into his office to say we're going to broadcast this on EDU TV, I'm not sure if he really understood what we were trying to do, but he did let us experiment and he let us go forward with that. So thank you, sir. And of course, all the teams that are here, you know, if you've reached the finals, well done and good luck. All right, my foremost request is that we are all here for you, and it would be nice if all these people who are speaking on stage, if we could give them a little time and leave the discussion for later. Number 2, I would like to reiterate that, you know, all these media universities who helped us in showcasing the projects, जिन्होंने दिखाया ये project live, to the families, to all of us, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया. Mass communication universities had a huge role to play this year for bringing Imagine Cup competitions live on the HEC television. This would not have been possible without the enthusiastic and active support in all the 4 regions by the 4 universities. To give you an overview, let us share the highlights of this competition via a short video. Imagine Cup is an annual competition sponsored and hosted by Microsoft Corporation with the collaboration of Higher Education Commission. Under the Education Transformation Agreement, Higher Education Commission signed an MOU with Lahore Garrison University, Rifa International University, University of Gujarat, Zebist University,
and Sindh Madrasatul Islam, Karachi. For the first time ever, Imagine Cup Regional Finals 2019 had been broadcasted live through HEC web television platform. Karachi Commission of Pakistan Microsoft Imagine Cup यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से जो प्रोजेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स की जानिब से सबमिट सारा सिस्टम बनाया। इसकी मेंटेनेबिलिटी क्या है, क्या कितना मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी इसकी? कि वो नौजवान जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और जिनमें क्रिएटिविटी मौजूद है, उन सब को हमें होस्ट करने का मौका मिला। Regional Finals Quetta. हमारी गपशप चलती रहेगी। But before moving on, I'd like to call the team mastermind and इनका ताल्लुक जो है वो ब्यूटम से है। जो स्टूडेंट्स थे वो बड़े स्टैटिक किस्म के प्रोजेक्ट्स या कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स चूज करते थे, वेबसाइट्स बना ली, एक्स्ट्रा ओवरहेड ले लिए हैं। लाइक देयर आर नंबर ऑफ मेडिकल स्टोर्स जिनका एक पुराना काम चल रहा है। Regional Finals Islamabad. कंपटीशन चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2019 का नॉर्थ रीजनल फाइनल की हम लोग तरफ बढ़ रहे हैं इसकी तरफ। Have to keep them abreast with these emerging technologies. And my message to them is, think what they want to do in their life. Yeah, I think it's a great opportunity for the students. लड़के और लड़कियां बच्चे आके अपना एक आइडिया दे रहे हैं, they are putting up effort. काम करती है टेक्नोलॉजी को एक प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाकर मार्केट तक लेके जाना, मार्केट प्लेस में, और फिर कस्टमर्स तक उसको सेल करना। Finals Lahore. Hello everyone, my name is Duran Nayab and we are live from Lahore Garrison University. Now what do we have here? One idea starts the journey. That's the motto that will be echoing throughout the journey for the students for Microsoft Imagine Cup 2019. Main thing is, as they've given an idea, I think it's an interesting idea. My inspiration is success. Success is the inspiration itself. It's not LGU, it's Pakistan. Now, to honor these 4 media universities, I would like to request all of you to please come forward and distribute the shields to the media universities. I'd be calling out their names one by one. Tariq Saab, Abid Saab, Asif Saab, please aaiye. From Lahore Garrison University, Major General Retired Ubaid bin Zakaria. Thank you, sir. From Zabest University, Dr. Khusro Parvez. Thank you, sir. Due to prior commitment, Dr. Muhammad Ali Sheikh could not make it from Sindh Madrasatul Islam University, so I'd like to request Chatta Saab to please come forward and accept on his behalf. Sindh Madrasatul Islam University. And sir, you'd have to stay here for one more second. From University of Balochistan, for Professor Dr. Javed Iqbal also, kindly accept the shield. Thank you, all of you. Tariq Saab, if you could just please come forward and say a few words. Tariq Saab, if you could please come forward and say a few words. Would you like to do it afterwards? We have, it's up to you. It's totally up to you. All right. Okay. So I'd like to invite the following members on stage. I would like everybody to be here.
Mr. Abdullah Fayaz Chatta, Director Operations PAN, Naveed Tahir Saab, Director PAN, Faisal Rafiq Saab, Deputy Director Systems Management, Jibran Jamshed Saab, Education Lead Pakistan Microsoft, Rizwan Sheikh, myself, Mohammad Suhaib from Microsoft Education Program Manager. I would like everybody to be here on board so we can recognize all you people, something that you've all been anxiously waiting for. All right, the first thing that we'd like to do is to recognize one university that came up with maximum participation. LGU it is, it has a special place in our heart today as that it's not only the top participating university in Pakistan, but also the 4th highest in NEPA region. Please, I would like to request Major General Retired Ubaid bin Zakaria to please come forward again and accept the shield for maximum participation. People who played a huge role in the success and in actually building up the entire deal, the judges. They've been working day and night with us in all the 4 regions, and I would like to call out their names one by one. They'd be requested to please come forward and accept the token. Mr. Afif Janjua from Systems Limited. Mr. Afif Janjua from Systems Limited. I'll quickly call the names so you can leave the aisles meanwhile. Mr. Usmanur Rahman, Systems Limited. Mr. Mohammad Zunair from Systems Limited. Abdur Rahim Saab from Systems Limited. Usman Sheikh, MVP, Microsoft. Dr. Riaz from Butams. Dr. Mohammad Nadeem from Butams. Miss Umaima Jabin from Excelity. Miss Umaima. Mr. Kashif Jamil from Excelity. Mr. Kashif Jamil from Excelity. If you want to listen to your announcements, you'll have to clap. All right, Dr. Adnan Ashraf from Mehran University. Dr. Adil Akram from UAT Texila. Dr. Saad Rahman from NAS TME. Mr. Shahzad Sayyed from Half Bite Studio. Half Bite, yes, Half Bite Studio. And Mr. Muhammad Farooq from 11 Values. Our lineup of judges worked day and night on these projects. This process started months and months back. Thank you so much, everyone, for being here. Mr. Muhammad Farooq, please come forward. Shahzad Sayyed Saab. That's it. If somebody has received a shield with another name, please talk to us after the program. We have the shields here, just in case. This is just in case. All right, gentlemen, you'll have to stand for a little while. To announce the regional winners. Yes, now is the time. From the South, Karachi, the number 1 team is Creative Crew from Siba. Please come forward, hurry up. All right, from Creative Crew, we have Ghalib, we have Falak, we have Akash. Number 2 is Herbjis
Usman Institute of Technology, Talal Ahmed, Mohammad Hamad, Mohammad Mujtaba. Team HEC. This region is South. All of it is South G. And number 3 from South is HBA from Ikra University. I have been requested to contain the excitement to go from 3 to 1. So अब जो next मैं announce करूँगी, पहले third runner up होगा, second then the first one. ठीक है? I'm waiting for HBA. Is HBA here? Great. ये सारे South के हैं. Where is Herbjes? Herbjes, we are missing you. We've already announced your name. Talal Ahmed, Mohammad Hamad, Mohammad Mujtaba. The next region is Balochistan. So Balochistan, please get ready. Quetta. I am going from bottom to top. So third runner up from Quetta. West Markhors. Butams University. Abdul Wahab, Isha Arooj, Sana Tareen from Butams, West Markhors. Quetta wale tayar hain ji? Congratulations. Next in line, University of Balochistan, Sarim Stack Arena. Second runner up. Hurry up, hurry up. Sarim Khan, Nirmal Kumar, Khizar Khan. Sarim Stack Arena from University of Balochistan. And number 1 from Quetta, Balochistan, University of Balochistan in Coders Mafia. Ubaidullah Kakar, Habibullah and Jamaluddin. Ubaidullah Kakar, Habibullah, Jamaluddin, University of Balochistan, team name Encoders Mafia. Central. No, north. All right, now it's time for our north. Brace yourselves up, all the teams from north. I'll start from bottom to top. Number 3, Smart Autism, Fatima Jinnah Women University. I would really like to request the VC of Fatima Jinnah University to please come up on stage. It's a proud moment. Thank you, ma'am. Girls, hurry up. This is Mazia Mubin and Naya Mishal. It's a good moment to share that we had 25% of female participation this year. Bravo. All right, the second runner-up from North is from the university, Nust Foodie Nose. So I'd like to call Anshara Beg. Anshara Beg from Nust with the project Foodie Nose. Congratulations, Anshara. And the first one from North in the regional competitions, Nust University Minerva team. Team Minerva.
Hurry up, girls, hurry up. Team Minerva from NUST. Please give them a round of applause. All right. From Central Region Lahore, again I'm going from bottom to top. We have Tech Smart Solutions, Smart Homes, KFUIT. The Vice Chancellor from KFUIT is also here. I would like to request him to accompany them on stage. Sir, please. KFUIT. Number 3 from the Central Region Lahore. It's the first time they had participated. Congratulations. Number 2 is from FAST University VRSR team. Dr. Saab is here, Dr. Ayub Alvi is here. I would like him to please come forward also to accompany the students. This was Numan Maqsood, Shaul Munir and Shahriyar Khan. Now I'd like to invite from University of Gujarat Microweb as number 1 team from Central Region Lahore. Saqib Rasool, Aqib Rasool, Sabahat Rasool. Microweb team. They're all siblings, by the way. By the way, they're all siblings. And they're stuck at the back, all 3 of them. नेशनल विनर्स के ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी टेंशन बिल्ड करिएगा. And now the moment that we are all anxiously waiting for. Do you want to wait for another 10 more minutes? 5 minutes, I need a break. All right. Let's start again. Kuch to hona chahiye. So we'll start from bottom to top again. So the third one is, what do you expect? What do you think it is? Which university? City University, Peshawar. The project is City Care, Zartasha Saeed, Mohammad Mubin. I would like to request the VC of City University. Ladies and gentlemen, listen up. VC of City University, if we could have them, or with all these children, if he can join us on stage if he's here. Is he here? प्रोजेक्ट्स 300 प्रोजेक्ट्स में से 48 में से रीजनल विनर्स और उनमें से भी ये नेशनल विनर्स है. सो दे आर अ बिग थिंग. यस. द सेकंड रनर अप इज, प्लीज गेस, Creative Crew. The second runner-up is Creative Crew from Sakhar IBA. Please give them a big hand.
Okay, 5 minutes break. All right, the national winner announcement. This team is traveling to Amsterdam. This team is the one, inshallah, hopefully we all have our hopes associated to it कि जो हमारा big Imagine Cup final है Seattle में है उस तक ये पहुँचें after the MIA finals in Amsterdam and win us a Imagine Cup 2019. The name of the team is, any guesses? All right, it's NUST University Team Echo Wave. If I could have the Commandant sir, please, if you can come up on stage, Mr. Shuaib, if you can please come up on stage, the NUST team. Registrar from NUST, please come forward. Registrar sir, if you're here, please come forward. This is the winning team. I would like you to stay for a few more minutes. There is something that we want to give out also. The cash prize for this event is $100,000 if we end up winning. I'd like to close this event here today. This event is a product of a lot of ingredients. One of such ingredients are the ushers. Ushers who are very, very active throughout the event. Thank you NTU and ComSats for providing us with this opportunity. All right. Our special thanks to the ushers from NDU and our special thanks to the ushers from ComSats University. There are 2 shields that we'd like to give out. One of this would go to the band that performed live. So please come up on stage for the live performance. All right, the shield is going out to the band performers from Garrison University. And we would like to invite the team of RIFA to please come up on stage for covering the event today. Thank you so much, RIFA University. If any one of them is still inside, rather than covering around. All right, we have it on their behalf. I would like to thank everyone for their presence and end this program with the hope of bringing progression and innovation in terms of education and technology in Pakistan, and pray that we move forward and achieve a flourishing economic advancement by empowering our students today with the latest skills and technology plus knowledge for tomorrow. Thank you everyone. Dinner will be served shortly outside.